Okay. Okay, so the first thing we are going to talk about is the Skinner's reinforcement theory. Okay, now this theory is a psychological concept which has been applied to the field of training and development many times. And it tries to understand how reinforcement can influence and shape employee behavior. This theory actually suggests that behavior can be modified through positive and negative reinforcement, as well as punishment. So what we'll do is, through example, we will explore this theory, and I'll quote organization relevant examples as well for you. Okay. So there's a scenario. Consider this. Imagine a large retail organization that wants to improve the customer service skills of its employees. They are specifically focused on increasing the number of upsells and cross sells during customer interactions. Now, upsells or cross sells क्या हो सकता है? Imagine करो कोई है retail background से यहाँ पे. Upsells means और एक product बेचना. Cross sells means कोई और product which is not related customer we are selling. Correct. Upsell मतलब 500 ग्राम खरीद रहा है, उसको 2 किलो का बेच दो. Upsell, upgrade. And cross sell is he wants to purchase one product, उसको कोई और cross sell कर दिया. तो दाल खरीदनी है, उसके साथ दूसरी दाल भी हमने चिपका दी. बराबर. तो हम लोग प्रिंसिपल्स भी डिस्कस करते चलेंगे. आई होप हिंदी इज कंफर्टेबल. इज देयर एनीबॉडी हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल? यू कैन कीप इट मिक्स्ड. Okay, I'll take it as yes. So we'll keep on discussing the concept, and we'll side by side discuss the example as well. Sounds good? So positive reinforcement. Now this involves providing positive consequences to reinforce desired behaviors. So in the context of retail organization here, positive reinforcement could involve offering rewards to the employees who successfully upsell or cross-sell products to the customers. Yes. Now, the employees who achieve a certain number of successful upsells in a month receive a monetary bonus or gift cards. So this is called positive reinforcement. इसका मतलब ये है कि अगर आप पॉजिटिव बिहेवियर को रिवॉर्ड करोगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और वो कंटिन्यू होगा, मतलब वो बार बार होगा, रीइंफोर्स होगा. वो लोग मोटिवेटेड होंगे उस चीज को बार बार करने के लिए. सिंपल कॉन्सेप्ट है. दूसरा है नेगेटिव reinforcement. So negative reinforcement entails removing or avoiding negative consequences in order to encourage the desired behavior. So in taking the same example in the retail setting, this might involve removing certain sales targets if the employee consistently meets upselling and cross-selling goals. अब वो consistently target meet कर रहा है तो उसको बार बार रिवॉर्ड करने का कोई फायदा नहीं है कि consistent हो चुके हैं, हम कुछ और ट्राई करेंगे. तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि उस बिहेवियर को हम डीप्रायोरिटाइज कर दिया, डीमोटिवेट करें ताकि वो बिहेवियर रुक जाए, ऐसा. सो दिस इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. थर्ड इज पनिशमेंट. नाउ पनिशमेंट में क्या है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस टू डिस्करेज अनडिजायर्ड बिहेवियर्स. सो इन दिस केस इट कुड मीन एड्रेसिंग एम्प्लॉइज हु कंसिस्टेंटली फेल टू एंगेज इन अपसेलिंग. और कुछ लोग होंगे जो थोड़ा सा नालायकी करेंगे, वो लोग कितना भी मोटिवेट कर लो वो नहीं करेंगे, अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग नहीं करेंगे. सो एम्प्लॉइज हु कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म इन अपसेलिंग, they will receive verbal counseling. Either you'll give them performance improvement plan, or you'll do some counseling, or you will have their work schedule adjusted. Like in our organization, if somebody is not performing, what we do is we put him away from that department, we put him in some other department. So this could be a punishment also. So these are the three things. Okay, so if I have to apply this in an organizational setup, mostly you'll see the organization would go for sales champion of the month kind of concept. I'm sure your organization would have too. Yes or no? Yes. Absolutely. So in the regular team meetings, you can include recognition and praise for the employees who have achieved their upselling targets. This is your positive reinforcement. What is negative reinforcement? Now, employees who will meet their upselling targets consistently
are given the option to choose their preferred shifts. चलो ठीक है, अब तो तुम कंसिस्टेंटली तो मीट कर रहे हो, एक काम करते हैं, तुमको हम कुछ और ऑप्शन देते हैं, अभी बार बार तुमको रिवॉर्ड नहीं दे सकते, तो यू कैन चूज प्रेफर्ड शिफ्ट्स और डे ऑफ्स आप अपना चुन सकते हो, समथिंग लाइक दैट, जस्ट एन एग्जांपल. And the organization also might refrain from introducing additional tasks for employees who excel in upselling continuously. Talking about punishment, the managers provide coaching and performance improvement. आप as a trainer आप भी करते होंगे. The people who are not performing, you provide either coaching or you put them under some performance and improvement plans, right? So in case of severe underperformance, employees may face temporary shifts or less customer facing roles until they employ their improvise their selling skills. So as a result of applying Skinner's reinforcement, इसका benefit क्या होता है कि organization observes following outcomes, which I'll going to tell you. Number one, increase in upselling and cross-selling leading to higher revenue. Number second, improved morale and motivation among employees as they strive for positive reinforcement. Third, a decrease in number of employees consistently failing to meet upselling targets due to the application of punishment and corrective measures. So in summary, the Skinner reinforcement theory can be effectively applied in an organizational context, such as employee training, to encourage and shape desired behaviors, ultimately leading to improved performance and outcomes. This is very simple. I hope I made sense. कौशल भाई, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड एक्सटेंशन ये समझ में आया, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं समझ में आया, इसका कोई और एग्जांपल? चलो ठीक है. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. Imagine your manager keeps on ignoring. Suppose you come up with certain idea again and again. Okay, let me give you this example. Chalo, theek hai. Negative reinforcement. This is my example I'm sharing with you. In my organization, I was trying to pitch a certain tool to gauge the employee employee engagement. Yes, employee engagement में tool introduce करना चाह रहा था. इसका नाम है Amber. सुना है आप लोगों ने Amber का नाम? सुना है Amber chat? ये एक employee engagement tool है जिसमें आप एम्प्लॉइज को एक चैटबॉट के थ्रू एंगेज करते हो और उनसे फीडबैक लेते हो कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है. सो इसका जो खर्चा था वो काफी ज्यादा था, अराउंड 8-9 लाख रुपया मांग रहे थे. मैं अपने मैनेजर को अप्रोच करता था, अपने फाउंडर को अप्रोच करता था बार बार कि इसको हमको इम्प्लीमेंट करना है. वो बार बार मेरे को बोलते थे नहीं इसको और थोड़ा रिवाइज करो, और थोड़ा रिवाइज करो. तो 9 लाख से मैं उनको नेगोशिएट करके 5 पे ले आया. फिर जब लेके गया तो फिर कहते नहीं नहीं इसको और कम करवाओ. मैं 2 लाख पे ले आया, 2.5 लाख पे ले आया. जब 2.5 लाख पे ले आया तो फिर लास्ट में उन्होंने कह दिया कि नहीं 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 इसको अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे. सो they did not want to introduce that tool. Because of that, they started nagging, थोड़ा सा इग्नोर करना या किसी तरह से डिस्करेज करना, that we don't want to implement this. तो इवेंचुअली क्या हुआ, फिर मैंने बोला ठीक है, आई गिव अप, ठीक है नहीं करेंगे. This is negative reinforcement. They didn't Just want. add on to your sorry question. Go ahead. No, I'm done. Yeah, just to add on to your example that you were giving in connection to the 4 pointers is अगर दूसरा outlet open हो जाता है and the sales rep wants to move to that new outlet but the manager does not release it, तो probably constant nagging, नहीं वो बुरा है, नहीं वो अच्छा नहीं है, नहीं. So I think there is where negative reinforcement can apply. Correct. बिल्कुल सही है. Going with the simple logic of this 2 word negative reinforcement. So anything that I repeatedly keep telling in negative sense or with an understanding that something should not happen, and then I try to reinforce that into somebody else's brain, that means negative reinforcement, right? Yeah. Yes. And then we can practically implement that in the practical scenario.
Yes. Correct. Shall we move ahead? So ये Yes. theory हमने we'll talk about Bloom's expectancy theory. So it has 4 levels. Basically 3 levels: effort, performance, outcome, and last end result is motivation, of course. Okay, so let's talk about this. Now, this theory explains how individuals are motivated in the workplace based on their expectations of rewards and outcomes. Unki expectation ke basis pe. So we'll explore this theory with some example. Like take a scenario. Imagine there's a technology company. Anybody working in tech company right now here? Imagine there is a tech company that wants to enhance the motivation and performance of its employees in a software development team to meet a project deadline more consistently. So एक software development team है, एक tech company है, वो अपने टीम का जो performance और motivation है उसको enhance करना चाहती है so that they meet a project deadline. Now इसमें हम Bloom theory को बिठाते हैं और उन तीनों कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे और फिर एग्जांपल को फिर आगे बढ़ाएंगे. ठीक है. सो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं. सबसे पहला एक्सपेक्टेंसी. नाउ व्हाट इज दैट? इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स बिलीफ दैट देयर एफर्ट विल लीड टू अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. मैं इतना एफर्ट मारूंगा तो इतना परफॉर्मेंस निकल के आएगा. ठीक है. सो इट्स अ परसीव्ड प्रोबेबिलिटी दैट एफर्ट विल लीड टू अ गुड परफॉर्मेंस. सिंपल है. दूसरा एलिमेंट है इसका इंस्ट्रूमेंटैलिटी. So instrumentality क्या है? It is the belief that if a certain level of performance is achieved, it will lead to a desired outcome of reward. तो अगर इतना level of performance होगा तो it will definitely lead to a certain outcome. ये भी simple है. And third is balance. Balance क्या है? Value. It represents a value an individual assigns to the expected outcome or reward. कि मैं अगर इतना कर रहा हूं तो मुझे इतना तो मिलना चाहिए. टाइप्स. ठीक है. अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 20 लाख की गाड़ी बेच रहा हूं तो उसका 1 या 2% मेरे को इतना इंसेंटिव तो मिलना चाहिए कंपनी से. इस तरह से. सो 3 चीजें था. 3 कंपोनेंट्स है. एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड बैलेंस. और ये एक आपस में कनेक्टेड है. एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एफर्ट will lead to a particular amount of performance. A particular amount of performance will lead to a certain amount of value. ठीक. Now, how do you apply it? So the organization begins by identifying factors that may impact employees' expectations regarding their efforts and performance. So they recognize that software developers may lack motivation due to unclear project goals and role expectations. कई बार क्या होता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है बीच बीच में गोल्स को चेंज करता रहता है. सो अब ये आइडेंटिफाई कर लिया ऑर्गेनाइजेशन ने. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? द कंपनी टेक स्टेप्स टू क्लैरिफाई प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स and provides detailed job description to help employees understand what is expected out of them. ये लो भैया, तुमको एक डिटेल तुमको दे दिया, ये दिस इज योर जॉब डिस्क्रिप्शन, तुमको इसको फॉलो करना है. एसओपी बना दिया तुम्हारे लिए. ठीक. ये कंपनी ने किया जस्ट टू ensure first point is taken care of. Now let's talk about instrumentality. The employees need to believe that their high performance will result in meaningful rewards. So the company realizes that previously the employees did not see a direct link between exceptional performance and rewards. उन्होंने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया. So what this time the organization does is they revise its reward system and they tied the performance evaluation to a specific project milestones and deadlines. कि भाई अगर आपका प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर माइलस्टोन को टच करेगा और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर करेगा या उससे जल्दी करेगा तो वी विल रिवॉर्ड दिस टीम. सो जितने भी हाई परफॉर्मिंग डेवलपर्स हैं उस टीम के अंदर विल नाउ हैव अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन देयर एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स. कि भैया हमको वो डेडलाइन है उससे पहले अगर कंप्लीट करेंगे तो हमको रिवॉर्ड मिलने वाला है. सो दे स्टार्ट वर्किंग इवन बेटर. सो दे स्टार्ट परफॉर्मिंग. Coming to the third point, value.
See, the company acknowledges that some employees may not be motivated by the current reward system. क्योंकि होता है टीम में कुछ लोग होते हैं जो वैल्यू नहीं करते हैं रिवॉर्ड को, राइट? तो कंपनी क्या करेगा? The organization conducts surveys and interviews to understand the preference of its software development team. कि आपको क्या चाहिए, वो उनका सर्वे करेगी, उनका इंटरव्यू लेगी. And then they discover that developers highly value opportunities for skill development and recognition from peers. तो हो सकता है उनको रिवॉर्ड मोटिवेट ना करे, उनको कोई और चीज मोटिवेट कर सकते, वो किसी और चीज में वैल्यू देखते हैं कि अगर उन्होंने डेडलाइंस मीट कर लिया, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव किया, तो उनको हो सकता है प्रमोशन मिल जाए, या उनको किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, या उनको किसी स्पेशल प्रोग्राम के लिए नॉमिनेट कर दिया जाए जहां पे वो एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तीनों चीजें आ गई इसमें. नाउ एज अ रिजल्ट, जब आप रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी अप्लाई करते हैं, the organization observes that now the employees have a clear understanding of what is expected out of them, leading to improved effort and performance. And the link between performance and reward has become evident, motivating the employees to work diligently to meet project deadlines. ठीक, so ये था आपका रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. So इसकी समराइज करते हैं. This can be effectively applied in organization context to enhance employees' motivation and performance by aligning their expectations, performance, and desired outcomes. And this will in turn contribute to a more productive and engaged workforce. Okay? So that's it. Now I'll How pause is it here. different from any other? How is it different from any other theory? क्योंकि अभी no, comparing to what we have studied earlier, बहुत सारी theories पढ़े हैं हम. Okay, so where we talk about no reaction, where we talk about no the outcome, you know. So सारे एक जैसा लग रहा है मुझे. Sorry to no say so because being from a non-HR no background, no ऐसा लगता है कि okay, you're giving a training to somebody, then you're looking at the reaction, then you're actually seeing the behavior of the person and then the outcome, which we otherwise call no results. So कैसा differentiate कर पाते हैं इसको? बताता हूँ. देखो सिद्धार्थ, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ना n नंबर ऑफ सिचुएशंस आएंगे, n नंबर ऑफ आउटकम्स या गोल्स होंगे, अलग अलग तरह के, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए. आपको जब बहुत सारे थ्योरीज के बारे में मालूम होगा ना, तो आप कौन सी थ्योरी कहां पे अप्लाई करनी है या कब अप्लाई करनी है, इसके बारे में आपका दिमाग खुलेगा. जो पहला हमने स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी देखा, उसमें ये बताया कि भाई अच्छा काम कर रहे हो, उसको रिवॉर्ड कर दो, खुश हो जाएगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, वो बार बार करेगा उसका. लेकिन अगर आपको चाहते हो कि वो पर्टिकुलर बिहेवियर ना करे, तो उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दो, तो वो बंद कर देगा. यहां पे वो ये बता रहे हैं कि दूसरा वाला जो अभी रूम्स एक्सपेक्टेंसी है, कि एक सर्टेन लेवल ऑफ एफर्ट अगर मैं दिखाऊं कि बॉस आप एम्प्लॉय हो, अगर आप इतना एफर्ट लगाओगे ना, तो आपका परफॉर्मेंस यहां पे आ जाएगा, और अगर ये हो जाएगा तो हो सकता है आपको रिवॉर्ड मिल जाए, आपको ये मिल सकता है, वो मिल सकता है, हो सकता है प्रमोशन, क्या पता आपको दिल्ली से बैंगलोर शिफ्ट कर दिया जाए आपके होम टाउन में. तो वो जो एक्सपेक्टेशन है, वो उसने डिजायर्ड आउट परफॉर्मेंस का लेवल अचीव किया, और परफॉर्मेंस का लेवल अचीव हुआ तो उसमें उसको getting the desired outcome. Okay, got it. तो इसको आप इन अलग अलग थ्योरीज को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं. ओके, ठीक. और हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए यूज कर, राइट, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस भी ये चेंज हो सकता है. ठीक है, तो जब इतने सारे टूल्स आपके पॉकेट में होंगे, तो आप ऐसा निकाल के देखोगे यार कौन सा टूल यूज करना है, ये वाला, चलो इसको, ये टूल को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ऐसा. ठीक है ना हिमांशु, मजा आ रहा है? यस सर, बहुत मजा आ रहा है. सिंपल वे वी कैन से वी आर क्लियरिंग एम्प्लॉयज गोल्स, कि भैया आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा. सो वी आर मेकिंग अ क्लियर इमेज इन देयर माइंड, सो दे विल मोटिवेट एंड वर्क. देखो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ाना है, कंपनी को अच्छे रेवेन्यू पे लेके जाना है. वो कैसे आएगा? जब
डिजायर्ड जो हमारे टारगेट थे, एनुअल टारगेट्स थे, वो मीट होंगे। वो कैसे मीट होंगे? जब लोग मोटिवेट होके काम करेंगे। अब मोटिवेट कैसे होंगे? तो मोटिवेट करने के कई तरीके हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन है, नेगेटिव मोटिवेशन है। उसको लॉलीपॉप दिखा दो, उसको कुछ भी दिखा दो, किसी भी तरह से वो मोटिवेटेड होना चाहिए। उसको नचवा दो, उसको अवार्ड दे दो, उसको थाईलैंड भेज दो। नहीं? राइट। वही तो बहुत सारे कंपनीज करते हैं, हाँ थाईलैंड भेज देता है। हाँ, थाईलैंड भेज देते हैं। तो ये सारा है। आपको कश्मीर आपने खुद स्पॉन्सरशिप लिया था या फिर? के पॉकेट में से। अच्छा। ठीक है, चलो, shall we move on? Katie, would you like to add something on that? No, I'm wondering whether these elements are separate by itself or they are interconnected, because in Room's expectation theory, expectancy theory, it is interconnected. It is interconnected. It's a Okay. chain. इससे So आया they are ये saying if expectancy is high हम्म, over performance, so that's one element, and the performance is high over outcome. ये दो क्या चीज है, मेरे को समझा नहीं. देखो देखो देखो, एक परसीव्ड प्रोबेबिलिटी है कि भाई इतना एफर्ट मारोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस होगा। कहने का मतलब, इमेजिन करो आप रेस में दौड़ने वाले हो और आपका कोच कह रहा है कि यार तूने ये जो 100 मीटर का रेस है 10 सेकंड में कंप्लीट किया, एक काम कर, थोड़ा और एफर्ट मार, थोड़ा सा और तेज भागने की कोशिश कर। एक काम कर, तो अपने जूते में स्पाइक्स जो है ना थोड़े और अच्छे वाले कर ले, तो ये 0.5% का और इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो थोड़ा एफर्ट और मार। तो थोड़ा और एफर्ट Okay. मारने से वो 10 सेकंड में किया, वो 9.5 सेकंड में हो सकता है तुम 100 मीटर कंप्लीट कर लो। राइट? ठीक। तो विच लीड्स टू गुड परफॉर्मेंस। अब अच्छा परफॉर्मेंस है नाउ, इफ यू परफॉर्म वेल तो क्या होगा? you will meet your desired outcome. What was your desired outcome? आप चाहते थे कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूं और 9.5 सेकंड्स का रिकॉर्ड को तोड़ के मैं 9.2 या 9 सेकंड में कवर कर लूं 100 मीटर रेस। Correct. सो इतना एफर्ट मारूंगा तो ये परफॉर्मेंस होगा, ये परफॉर्मेंस होगा तो ये टारगेट मीट होगा। अब जब ये टारगेट मीट होगा तो व्हाट इज द वैल्यू? गोल्ड आ जाएगा जी। Understood. और जब Understood. गोल्ड आएगा तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा और Or more golds. मोर गोल्ड्स। करेक्ट। अभी एशिया कप जीत, एशियन चैंपियनशिप जीता, अभी ओलंपिक्स जाऊंगा, फिर कॉमनवेल्थ जाऊंगा। हाँ ठीक है। तो ये था रूम्स। ये कॉल शायद अभी स्टॉप हो जाए। लेट्स एंड द कॉल राइट नाउ एंड रीजॉइन वंस अगेन। ड्रॉप एंड रीजॉइन this again. Okay, so now we are, I need to share the screen as well, right? Is this screen visible? What do you see here? Loki's goal setting theory. Do you see the PPT? Yes. Okay. So Loki's goal setting theory. Now imagine there is a manufacturing company and it aims to boost the productivity of its assembly line. Boost the productivity of assembly line workers while taking into account the varying levels of task complexity. ठीक है? So goal setting theory. Now, so जो लोकी का गोल सेटिंग थ्योरी है, ये फोकस करता है बेसिकली 5 चीजों में: क्लैरिटी, चैलेंज, कमिटमेंट, फीडबैक एंड टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है? सो विल गो वन बाय वन। विल टॉक अबाउट क्लैरिटी फर्स्ट. So I'll discuss the concept and then come to the application also. So first point says
clear and specific goals. Clarity की बात कर रहे हैं. So goal should be clear, specific, and tailored to the individual's role and complexity of their tasks. उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है exactly. We are talking about the people who are, working at this assembly line, probably packing industry or probably car manufacturing industry or anything. So they should be clear. That's the first. Second is challenging goals. The goal should be challenging but achievable. तो उनको पहले आपने goal define किया और उस goal को clear कर दिया कि भाई ये आपसे expected outcome है. मतलब आपका फॉर एग्जाम्पल डैशबोर्ड, मैं कार मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल देता हूं. तो असेंबली लाइन में जब कार बन रही होती है तो हर एक वर्कर का ना टाइम फिक्स्ड होता है. वो असेंबली लाइन तो चल रही है, तो विद इन से 30 seconds you should bolt the entire dashboard into the car. ये आपका काम है. 30 सेकंड के अंदर ये पूरा डैशबोर्ड आपको गाड़ी के अंदर फिट करना है. या within 2 minutes, sorry not 2 minutes, within 50 seconds आपको ये इंजन जो है इसके 12 seconds, ओके चलो 12 seconds आपको इंजन इसके अंदर बिठाना है और उसको लॉक करना है, उसको स्क्रू करना है, whatever. So this is the 12 seconds timeline कुछ है क्या? Is it fixed timeline or you're just giving an example? होता है फिक्स टाइमिंग होता है, फिक्स टाइम होता है. ठीक है, तो इस तरह से तो initially the goal is very clear to them and it is measurable. Second is challenging. The goal is challenging. आप देखो इतने सेकंड में ये काम करना is challenging but achievable. और अगर ऐसा लगता है कि ये नहीं हो पाएगा तो उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते हैं उस कॉम्प्लेक्स टास्क. Third is feedback and monitoring. So regular feedback and progress monitoring is done. And you also consider the unique challenges of that particular task with different complexities. अगर टूल गायब हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा, तो वो आप अलग अलग सिनेरियो को लेके चलते हैं और उसको मॉनिटर भी करते रहते हैं कि ये एक्चुअली अचीवेबल है या नहीं है. एंड फोर्थ इज कमिटमेंट. The individuals must be committed to achieve their goals. And this commitment should be fostered considering the complexity of this task. तो इसको application, first point था clarity. Recognizing the variation in task complexity, the organization defines a clear and specific performance goals for assembly line workers that consider the different tasks they handle. So what the organization do? They customize the goal based on the task complexity, ensuring that each worker's objectives align with their specific roles and responsibilities. Second, the company challenging goals. The company acknowledges that the level of challenge should be adjusted according to the complexity of the task. So what they do is, the performance goals are set at appropriate levels of difficulty, considering the inherent complexity of different tasks. So the workers handling more complex tasks are provided with goals that reflect these challenges. Third, feedback and monitoring. Given the difference in task complexity, the organization realizes that the feedback mechanism must be tailored accordingly. So what they do is, performance feedback and progress monitoring systems are adapted to provide task-specific feedback and address the unique challenges associated with varying levels of task complexity. Then comes the commitment. The organization recognizes that workers' commitment may vary depending on the complexity of their roles. So to foster commitment, what company does is that the workers are engaged in setting their goals. वो खुद अपना goal setting करें, considering the complexity of their task again, and the company acknowledges their efforts accordingly. So it's a result capital. So as a result of applying Loke's goal setting theory, the organization observes that workers have clear, specific, and appropriately challenging performance goals. Second, feedback and monitoring mechanisms are tailored to address the unique challenges. Commitment to goals is enhanced
as workers are actively involved in goal setting. So in summary हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं, considering the complexity of task, it can effectively enhance employee motivation, their performance and commitment. And by customizing goals and giving feedback and recognizing, to the varying demands of different tasks, organizations can create a more productive and engaged workforce. My father worked in a factory, and I can clearly relate these things. So in electricity production, the employees are motivated by setting a certain challenge for them and rewarding that challenge. तो आपको ये काम इतना टाइम में फिनिश करना है. गुड नाइट संजना. So great lullaby I sang for Sanjana today. I'm still struggling now. I seriously, she look at the commitment, man. She's amazing. Yesterday she was in the aircraft. Today she is, I think, in some hotel probably. And trust me, Yeah. she's equally committed everywhere. She does this plank every day. उसने I वो भी will talk challenge to, लिया. yeah, I Sorry. will talk to you about that separately, that plank thing. Sure. कल सैटरडे तो मिल ही रहे ना अमित भाई. हाँ सैटरडे मिल रहा है. इसमें कोई डाउट है क्या? मजे लो. मैंने जो बोला समझ में आया क्या? अभी yeah, please tell me. It's like sweet wine, you know. It will take some time Yes, to get Kaushal bhai. registered. Huh? It's like sweet wine. My goodness. Yeah. Okay. After every explanation of the theory, I look at Kethi. अभी केथी कुछ बोलेंगे ऐसा बोल के. अरे कुछ नहीं, बच्चे आ गए तो मैं उन लोग को पीछे पड़ गई, तो बीच बीच में मेरा छूट गया. So I'm trying to pick on what I've missed. कोई नहीं. I will try कि जो मैंने बोला उसको मैं आप लोग को मेरा जो स्क्रिप्ट है, सो ये जूम कॉल में स्क्रिप्ट भी रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है, तो ये जितना भी स्क्रिप्ट है ना वो मैं आप लोग को वर्ड फाइल में डाउनलोड करके दे दूंगा. ठीक है. So And the that's explanation easy. was good. I could relate with the example that you were giving. Yeah. Okay. So shall we discuss the last part? I wanted to finish this with this theory. I really don't want to get into that case study, to be honest. So this would be probably the last point I would be discussing. We are talking about the Adams equity theory. Shall we? और इसका जो डायग्राम है इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था मेरे को. इक्विटी थ्योरी डायग्राम जॉब मोटिवेशन का इनपुट और आउटपुट वाला. आई विल ट्राई. ठीक है, चलो. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अप्लाई किया जाता है टू अंडरस्टैंड हाउ एम्प्लॉइज परसीव फेयरनेस एंड इक्विटी इन द वर्कप्लेस. इट फोकसेस ऑन द बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉय ने कितना इनपुट दिया या एफर्ट लगाया या कंट्रीब्यूशन दिया एंड देयर आउटकम्स, उसको रिवॉर्ड कितना मिला या रिकॉग्निशन कितना मिला. ठीक है. सो लेट्स एक्सप्लोर दिस. तो एक एग्जांपल लेते हैं. इमेजिन अगेन देयर इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी दैट इज एक्सपीरियंसिंग अ ड्रॉप इन एम्प्लॉय मोरल. वो सॉफ्टवेयर कंपनी में एम्प्लॉय का जो मोरल है, मोटिवेशन है, वो डाउन हो रहा है और कुछ एम्प्लॉयज को लगता है कि वो उनको फेयरली ट्रीट नहीं किया जाता या उनको फेयरली रिवॉर्ड नहीं किया जाता फॉर देयर एफर्ट्स. ठीक है. आई एम श्योर दिस स्टोरी साउंड्स फेमिलियर. राइट. सो Very much. तो ये जो थ्योरी है ये दो प्रिंसिपल्स पे बेसिकली बेस्ड है, इनपुट और आउटपुट. सिंपल. सो इनपुट्स क्या है? दीज आर इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन, एफर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन देयर जॉब सच एज टाइम, अपना समय देते हैं, स्किल्स देते हैं एंड डेडिकेशन देते हैं. एंड outcomes are the rewards, benefits and recognition received in return for their inputs, and this includes their salary, bonuses, promotions and appreciation.
Now, we'll talk about perceived equity. Here, perceived equity. Perceived equity. Employee evaluate their perceived ratio of inputs to outcome. आप अपने दिमाग में perceive करते हैं ना कि मैंने इतना एफर्ट लगाया तो मेरे को इतना मिलना चाहिए. So they compare their situation to that of their colleagues or industry standards. कि मेरे बाजू वाला जो मेरे साथ कलीग है उसको उसी काम के कितने पैसे मिल रहे हैं या उसी काम की कितनी शाबाशी मिल रही है, या आप अपने ही जॉब में जो रोल है आपका इन सम अदर इंडस्ट्री सिमिलर प्रोफाइल आप कंपेयर करते हो कि अगर मेरी सैलरी 1 लाख रुपया है तो दूसरी कंपनी में इसी रोल पे एक और सेम सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसकी सैलरी कितनी, तो यू जस्ट कंपेयर टू डिटरमाइन इफ इट इज इक्विटेबल और नॉट, मतलब सही है या नहीं है. Now, talking about another factor which is inequity. If the employee perceives an imbalance in their input output ratio, either over rewarded or under rewarded compared to their peers, they experience distress and are motivated to restore the equity. वो अपने वापस इक्विटी में आना चाहते हैं. तो इसका एप्लीकेशन अगर हम देखें तो कैसा देखेंगे? The organization needs to assess the inputs and outputs. The organization has to recognize the need to assess how employee perceive their inputs and outcomes. तो क्या करेंगे? कंपनी क्या करती है? कंपनी करती है सर्वे. दे कंडक्ट सर्वेज, वन ऑन वन डिस्कशंस करते हैं ना, आप लोग करते होंगे, एज एन एचआर करते होंगे. आप वन ऑन वन डिस्कशन करते हैं ये चेक करने के लिए कि ये सेटिस्फाइड है या नहीं, अपने काम से खुश है या नहीं है, या खुश नहीं है तो क्यों नहीं है. कौशल जी, आई हाँ हैव जी. वन क्वेश्चन. ये जो हाँ. आपने ओवर रिवॉर्डेड कहा, वो ओवर रिवॉर्डेड कैसे वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. अभी यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ. कौशल भाई, कैन आई गिव एग्जांपल, वन एग्जांपल फॉर दिस? चलिए आप दीजिए एग्जांपल, फिर मैं भी कुछ करूंगा कोशिश. हाँ. Means suppose you and me, we both are working in the same organization, and Okay. we both are working on same project. Okay. Okay. And for doing the same project, if if we both are getting same salary, then okay, we both will work fine. Okay. But if Right. I'm getting more salary than you, or if I am getting little more incentive or recognition, then you will feel demotivated. हाँ, तो And at the same इसमें time, right. if vice versa happen, if Correct. you are I got getting your more point. salary, Correct. So yeah, I got your point. So here, इसमें जो issue है कि salary first of all, and all this data is very confidential. Okay, so generally that people don't share. Even the HR insists that you should not, share your salary perks and with other colleagues and all to maintain the balance. So how the other person will Okay. know salary? I mean, I don't know how much you Okay. take. Your takeaway may be Okay. assuming say 35 lakhs, and my takeaway is say 20 lakhs. Okay. So Okay, in we that are all case, working on the same project, right? So I okay, don't know your takeaway. So we are not sharing. okay. Okay, in that case, I remove salary. I just give an example. In that case, I am just saying that recognition or reward. If our boss is same, okay, if he is Okay. recognizing me again and again in front of the management, or if he is rewarding me, or if he is just praising me only, then that Right. is also one kind of Over inequity rewarding. between both of us. That is true. That is imbalance, or you can say biasness. So Okay, that इसको can थोड़ा be सा over rewarding. हाँ. ब्रिजेश इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में लेते हैं. ठीक है. Okay. एक बॉस है, दो एम्प्लॉइज हैं सेम लेवल पे. फॉर एग्जांपल मैं हूं और नीतीश है, हम दोनों ब्रिजेश जी के साथ काम करते हैं. ब्रिजेश जी हमारे बॉस हैं. अब हमारी हो सकता है तनख्वाह सेम हो, हमारा काम सेम हो, परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट सेम हो, लेकिन कौशल की तारीफ ज्यादा होती है. ठीक. Okay. अभी हम नीतीश की बात नहीं कर रहे, कौशल की तारीफ ज्यादा. तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट की बात हो रही ना. ठीक है. तो अगर तारीफ ज्यादा हो रही है तो कौशल क्या करेगा? कौशल कोशिश करेगा कि उस
जो ज्यादा तारीफ हो रही है उसको बैलेंस करें आउटपुट से, बराबर है? राइट राइट ज्यादा तारीफ हो रही है तो मैं को अपना आउटपुट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो वही बोला गया है कि अगर ओवर रिवॉर्ड हो रहा है तो भी एम्प्लॉय जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करता है, इक्विटी में आने की कोशिश करता है, अंडर है तो भी और ओवर है तो भी। तो इसको पॉजिटिव तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ओके ठीक, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। Sir, one second. Just जी here in previous point, I just want to add a little bit, like a real situation with me right now. I want to know my colleague salary, like like what my boss said. Everybody will get the same salary. As Right. first, what happened? We are getting as a freelancer 3,000 per day. हम्म Then my boss said we have right now a 6 months project, so we'll do on salary basis. Right. So they are doing 45,000 per month. Everybody. Okay okay Now I got to know from some people, like some people getting 60,000 also, 50,000 also, but not confirm they are getting or not. If I'm right talking correct my friend, they are Hmm. avoiding this topic by telling what is exact they are getting, by saying Exactly. here, there and not. So exact, Right, I right. don't know what my friends are getting. They are Exactly. always, here they are Oh, avoiding. correct Because we are working same, we have same Right. skills, same talent, everything is same. But due to the some age factor, for example, one lady is principal and her age is 55 or 50, and mine is 25. Work is same, everything is same. But I think she is getting more than me because of her age only. So Right, yeah. experience. So here in real life scenario, we can't understand why this factor इसका comes. salary कितना है? Correct, Maybe correct. negotiation skills here चलो, will be one. Absolutely. Yeah, Absolutely. ठीक Yeah, है। the yeah. people who So- ask more, they got more. So as a trainer, I'm happy that this example was good enough for you to relate with your situation. यही एक अच्छे ट्रेनर का गुण होता है कि जब भी वो ट्रेन करे तो ट्रेनी उस एग्जाम्पल से अपने आप को रिलेट करे। ओके, let's move on. Yeah, so we were discussing the application, right, of this theory. So to apply this theory, what organization does is to understand कि इनपुट और आउटपुट में इक्विटी मेंटेन्ड है या नहीं है, तो टाइम टू टाइम सर्वे करते हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे, या मंथली वन ऑन वन डिस्कशन करते हैं मैनेजर अपने पेयर्स के साथ, ये देखने के लिए कि ये लोग खुश है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है और क्या किया जा सकता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है to gain insight into what employees believe they are contributing and what they are receiving, right? Now, how does the organization identify perceived inequities? कई बार क्या होता है ना, परसेप्शन होता है कि मेरे एफर्ट के हिसाब से मेरा सैलरी नहीं है, एक परसेप्शन। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सो द कंपनी आइडेंटिफाई केसेस where employee perceive inequity either feeling under rewarded or over rewarded compared to their colleagues. तो वो क्या करते हैं, वो डेटा उठाते हैं, they analyze the data to identify individuals groups who might be experiencing perceived inequity. Benchmarking यूज करेंगे मैं भी। बेंचमार्किंग यूज करते हैं कि हाँ वो कर्व में देखते हैं कि किसका कम ज्यादा क्या है, तो उस तरह से वो एनालाइज करते हैं डेटा को, और उसको एड्रेस कैसे करते हैं, बिकॉज ये आइडेंटिफाई तो कर लिया, बट एड्रेस भी करना है। So how do they do that? The organization take corrective actions such as, बीच में आपने सुना होगा कंपनसेशन एडजस्टमेंट भी होता है, लाइक I've seen mine in my previous organization. हम अच्छा खासा काम कर रहे हैं, हमारी एक सैलरी है, अचानक से ही बीच में बिना बताए हमारी सैलरी बढ़ा दी 2-3 हजार रुपए ऊपर, वो बहुत पहले की बात बता रहा हूं। रिस्ट्रक्चरिंग, हाँ, तो ये होता है। या फिर किसी कुछ ना कुछ तरीके से दे ईदर एडजस्ट कंपनसेशन या प्रोवाइड एडिशनल रिकग्निशन। तो नाम के आगे असिस्टेंट मैनेजर लगा दिया, काम वही कर रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर दे दिया डेजिग्नेशन, चल जा खुश रहे, थिंग लाइक दैट। ठीक है, तो जैसे हिमांशु बता रहे हैं 40-45 हजार, आज से 10 साल पहले काम तो यही कर रहे थे ट्रेनर का, लेकिन हमको डेजिग्नेशन दे दिया था ग्रुप मैनेजर। सुनकर बड़ा अच्छा लगता था, ग्रुप मैनेजर, मजा आ रहा है। तो ऐसा, और वो टू ऐड टू दिस बार एक इंटरनल डेसिग्नेशन अलग और एक एक्सटर्नल डेसिग्नेशन अलग भी है। इंटरनल में मैनेजर रहेगा, बाहर वाइस प्रेसिडेंट रहेगा। हाँ, उसको ये नहीं मालूम तुम मतलब उधर बैठ के अटेंडेंस शीट भी भर रहे हो, खुद का डेटा बना रहे हो, फीडबैक फॉर्म पंच कर रहे हो, कोई है ही नहीं, खुद ही कर रहे हो सब।
खुद ही कंटेंट भी बिल्कुल बना रहे हो लो. So it's like that. So right. yeah, so the organization take corrective actions such as adjusting compensation, providing additional recognition, or offering opportunities for skill development based on the nature of pursuit. कि चल तेरे को एक काम करते हैं, हम तेरे को लीडरशिप स्किल्स के लिए नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, 3 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम अटेंड करके आ जा, खुश. So organization do that. So this is how this theory is implemented. But then what's important is communication and transparency is also very important over here. जिसके बारे में बात करना चाहूंगा. It is important to recognize that communication is the key to managing perceptions of equity, and the company focuses on improvising transparency in reward systems. Now, what do they do is they communicate openly with employees about the rationale behind compensation and recognition decisions. They need to provide clear guidelines for performance expectations and reward criteria also. तो जब आपको reward announce किया जाएगा तो आपको ये भी बताया जाएगा कि ये अचीव करोगे तभी रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है. सो इसका रिजल्ट क्या है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिजल्ट्स. कंपनी कैसे अप्लाई करती है इस थ्योरी को, ये हमने समझा. इसका रिजल्ट आउटकम क्या होता है? सो एज अ रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग एडम्स इक्विटी थ्योरी, द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व्स that employee perceive greater sense of fairness and equity in the workplace. तो आपने बहुत सारे सुना होगा, सर्वे होता है कि ग्रेट प्लेसेस टू वर्क फॉर, कंपनीज का होता है ना सर्वे, मैगजीन में आता है ग्रेट प्लेसेस टू वर्क फॉर. वो कैसे होता है? वो इसी तरह से होता है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है, दे एंश्योर दैट द एम्प्लॉइज परसीव अ ग्रेट सेंस ऑफ फेयर. It's Sanjana. Yeah. Yeah. So, employee perceive a great sense of fairness and equity in the workplace, and the morale and motivation improves as perceived inequities are addressed. So the organization also experiences increased employee engagement and more positive work culture, जिससे उनको in summary क्या होता है, उनको जब मोटिवेटेड रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, जैसे कि हम हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, तो हम बढ़िया काम करेंगे. ठीक है अमित भाई, है ना? तो I यहाँ cannot पे say the same. बस यू कैन नॉट. चलो मैं टच वुड कर लेता हूँ. Yeah. Okay, You are lucky. so that's all. We have discussed the 4 theories in detail. एप्लीकेशन देख लिया. तो ये रिकॉर्डिंग किया हुआ है ना क्लास का? बिल्कुल 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 सर. ओके ओके, थैंक यू. क्योंकि मैं लेट थोड़ा ज्वाइन हुआ, अभी जस्ट लास्ट का ही देखा मैंने. और उसका प्रेजेंटेशन भी जरा ग्रुप में डाल देना. जो आ गया सर, जैसी आपकी यू आ आर गया. डूइंग अ ग्रेट जॉब. You are doing a great job, and we are really lucky and blessed to have you in our team to pull everyone, really great job. Wonderful, Kaushal. Yeah, thank you Brijesh ji. चलिए ठीक है. Great job, कौशल. इसमें अपना मोटिवेशन किधर है, इधर ढूंढना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल. Ajay, you are talking about yourself or me? Us together. See the motivation. I'll tell you what motivates me, and what keeps me energized is those smiling faces which I see on the screen. Honestly, it actually gives me a different sense of high. And you know what motivates me? 8:30 you step home after work, and in 1 hour you sit with the book, and then 9:30 you do the session for us. I think so that's a driving motivation for me to pull myself off. Yeah. My daughter. When I see, right, when I see our group is, it's very vibrant, that itself motivates me. Otherwise, I have some other groups. Everybody is in a dormancy mode. कोई देखता नहीं, respond नहीं करता. But our group is very vibrant, So that vibrancy itself motivates me. अरे सब लोग कर रहे, चलो हम भी करते हैं. Exactly. This is what it is. Yes. Exactly. So, good morning, Sanjana. I really. She might have slept. We have a recording, Sanjana, for you. For the part you have missed, we have the recording. I'll share all the recordings. अभी पीछे 2-3 classes के भी recordings I'll share right now. My daughter complains a lot that I don't give. What they say is that
they say when you sleep and someone's talking, the dialogue gets registered in your subconscious mind. Oh my अभी God. बनी जो हुआ है ना वो Lovely. subconscious mind में register हो गया है संजना, टेंशन मत ले. Next. Then I think we should यानी all कि मैं sleep सबसे while the अच्छा session going. यही टॉपिक पे आंसर्स करूंगी एग्जाम में आया तो. It will come in the form of dreams right now. चलिए ठीक है But अमित भाई again, अब again, she's giving motivation to us. Means like you, Kaushal, means as Kathy was saying, absolutely that you reach home 8:30 and you prepare the session for us. Similarly, Yeah. I have seen Sanjana. I mean, yesterday she was in a flight. Today she Yeah. is, she's in I think some hotel. And Despite being tired. she's But I'm spending. so Yes, sorry I yes, yes, dozed off. Yeah, absolutely. it's not intentional. There No, is no, it's- motivation means amongst us means if we look at each other, so we can have that motivation. So I am motivated. कौशल, 5 हाँ साल जी। बाद तेरा थियरी आएगा बुक में. पता चला कौशल एक बुक लिख रहा है. हमारा नेता कैसा हो. अरे नहीं भाई ऑथर बन गया नेता कौशल. वेता नहीं बनना अगले इलेक्शन में कौशल खड़ा हो रहा है इलेक्शन Yeah, yeah. लड़ने के लिए. ISTD कोई का इरादा election. नहीं है कोई हाँ, इरादा नहीं ISTD है. election. That's why he was there in that ISTD office today, right? Yeah. That was random. Bye guys. कौशल ने गारंटी दे दी, Oh दुआ my दी है, God. पूरा बैच Bye. क्लियर Bye, होना संजना. चाहिए कौशल. Bye Sanjana. See you in Bye-bye. Ahmedabad. Yeah. Bye bye.